Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another preview on the channel. So Premier League is back यार. FA Cup हुए थे midweek में काफी interesting results थे, but I think the usual suspects made it through. United qualified, Chelsea qualified, Liverpool qualified with the kids. City absolutely destroyed their opponents, surprising absolutely no one. But now Premier League is back and we are back talking about the title race, man. सबसे पहले बात करेंगे आर्सेनल की. आर्सेनल प्ले अवे फ्रॉम होम अगेंस्ट शेफील्ड यूनाइटेड. नाउ शेफील्ड यूनाइटेड is the bottom place team in the Premier League and they've conceded 66 goals so far this season. Now, as an Arsenal fan, I want Arsenal to take that number beyond 70 यार. In our previous few matches, हमारे काफी अच्छे results रहे हैं. 6-0 against West Ham, 5-0 against Burnley, 4-1 against Newcastle United, and एक और टीम जिसका defense is probably not the best. We should be winning comfortably. देखो, कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है. It is a relegation fighting team. Every point is important for them. And relegation fighting teams के साथ एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है. They're not here to win. Sometimes against big teams, even a draw is more than enough. Even if they come away with 1 point, it's a massive point for them in the relegation zone. But if Arsenal have to win this, motivation की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी. Arsenal have to keep pace in the title race. Liverpool and City would have played their games and most likely they would have won them as well. तो हमें तो pace रखनी होगी. And against Sheffield United, we have to begin like we began against Burnley. सबसे पहले पहले 3-4 मिनट में ही पहला गोल मार दो. कहीं से भी आए, कोई भी मार दे, I don't care. But we have to start strong, we have to start quick, and we have to score early. The longer this game goes on, Sheffield और भी पीछे ज़्यादा रहती रहेगी अपने लो ब्लॉक में एंड उनको बीट करना उतना ही मुश्किल होगा. शेफील्ड में ऑफकोर्स बेन बेरेटन डियाज एक गोल थ्रेट है and McCarthy on loan from City is also there as well. But other than that, there is not anybody जो मेरे को लगता है particularly is a huge threat. Now, before this game, there are plenty of talking points, especially from a fitness point of view. पहली बार लगता है people are returning back to fitness and we might finally this season have a full squad जो फिट रहेगा. आर्टेटा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड उन्होंने उनमें बोला था कि थॉमस पार्टे हैज हैड 3 consecutive sessions now. There is another session this weekend जो if Partey clears very properly, he will be involved in the match day squad. थॉमस पार्टे ने सिटी वाले गेम से अभी तक नहीं खेला है where he came on as a substitute and he had a hand in that winning goal जिसने सिटी को एमिरेट्स पे हराया था. Since then we have not seen him. वो इंटरनेशनल ब्रेक के लिए भी नहीं गए हैं. He was out of AFCON as well. So it's nice to finally get Thomas Partey back for a crucial part of the season. Finally, Declan Rice could get a rest. Maybe Declan Rice moves up to 8, but Thomas Partey is a welcome addition. मिकेल आर्टेटा ने जिनचेंको एंड टोमियासू के बारे में भी अपडेट दी है दैट जिनचेंको एंड टोमियासू का एक और सेशन हमें देखना पड़ेगा कि अगर सैटरडे एंड संडे के सेशंस में टोमियासू एंड जिनचेंको परफॉर्म वेल, दे माइट बी अवेलेबल ऑन मंडे. बट जिस तरह से हम जिनचेंको एंड टोमियासू की रिकवरी हैंडल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता हम अननेसेसरली रश करेंगे. मे बी अनदर गेम फॉर किवियोर एट लेफ्ट बैक हु हैज बीन मैसिवली इंप्रेसिव बाय द वे, एंड मे बी दैट्स इनफ फॉर शेफील्ड क्योंकि इसके बाद Brentford wala game aayega and some other crucial games start happening, not only in our case but also for Liverpool and Man City who face each other. Gabriel Jesus के लिए थोड़ी सी pessimistic news है that he is fit enough, but Arteta is not sure of the load that Gabriel Jesus की knee handle कर सकती है. Now Newcastle के against Arteta felt that Gabriel Jesus को involve नहीं करना चाहिए, but he says that Gabriel Jesus is a very crucial player and his load has to be managed in a right way. So it लुक्स लाइक आर्सेनल को पता है कि कितने प्लेयर्स कब अवेलेबल होने चाहिए, कौन सा क्रूशियल पीरियड है एंड व्हेन डू वी स्लोली इंटीग्रेट देम इनटू द स्क्वाड. अभी रश करने का कोई पॉइंट नहीं बिकॉज बाद में वो लोग इंजर हो जाएंगे. ऑफ कोर्स क्योंकि ये शेफील्ड यूनाइटेड है, इनका गोल्स अगेंस्ट इज 66, देयर जीडी इज द वर्स्ट इन द लीग एट -44. there is a potential for us to increase our goal difference because goal difference पे भी कभी कभी लीग डिसाइड होता है and our goal difference right now is the best in the league. Now Liverpool will play Nottingham Forest. I expect them to score a few goals. Man City will play Man United who are not in the best vein of form right now, so they might end up scoring big. तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ कुछ गेम्स में अटैक विल नॉट क्लिक जैसे पिछले कुछ गेम्स में किया है. सो वेन एवर यू हैव द अपॉर्चुनिटी यू हैव टू कुशन दैट गोल डिफरेंस काफी हाई रखना पड़ेगा उसको.
And that is why there is another opportunity for us to pump Sheffield and then increase that goal difference even further. But सबसे important is winning. Finally, last update आई है fitness पे Jurien Timber की. Jurien Timber was photographed doing full contact training a couple of weeks ago. Now that is a welcome sign यार. Jurien Timber को first game में ही ACL injury हो गई थी of the season and he's been out for the entire season. He's a player we have missed because he is somebody who can play across all four positions and unki versatility, unka build up, we sorely missed. Now, I don't think Timber will play in this match or for the next few matches because ACL injuries have to be managed very carefully. If you re-injure your ACL, या फिर अगर आप rush back कर लेते हो, players can be out for another few months and we don't want him to lose for another season for sure. इसलिए I am expecting Timber to be involved in the squad probably in the month of April after the international break. But इससे पहले I think it will be too early for Julian Timber. Baki, if you ask me about the team, yeah, it has to be the same team. Raya in goal, White, Saliba, Gabriel, and Kivior in defense. ये defense तो पूरा sort होना चाहिए. I would not be opposed in playing Jorginho again because इस game में हमारे पास ball ज़्यादा होगी and Sheffield will also try to settle in a low block. Maybe Jorginho's ball जैसे उन्होंने Newcastle के against Martinelli को feed किया था. Maybe Jorginho becomes crucial again with Odegaard and Declan Rice in the midfield. Havertz up top, yeah, Trossard is probably the biggest question, although I would trust Trossard a little more here. Let Kai Havertz come off the bench and maybe give us another option if we fail to beat Sheffield in those options and starting lineup. And left and right, of course, Martinelli and Saka will stay. इसके अलावा द गेम ऑफ द वीक हैज टू बी द मैनचेस्टर डर्बी. मैनचेस्टर यूनाइटेड प्ले मैनचेस्टर सिटी एट द एटिहाद. रिवर्स फिक्सचर पे 3-0 लॉस हुआ था मैन यूनाइटेड का, वेयर इट ऑल स्टार्टेड विद अ वेरी कंट्रोवर्शियल पेनल्टी अगेंस्ट रासमस हॉयलैंड. Speaking of Rasmus Højlund is not available for Man United this fixture. In fact, काफी सारे players available नहीं है. Maguire, Lisandro Martinez, Luke Shaw, and so many others. Now, despite a disappointing Premier League result in the last game week, जहाँ पे वो Fulham से 2-1 हारे थे, United have bounced back admirably in the FA Cup जहाँ पे उन्होंने Nottingham Forest को हराया था. Andre Onana मेरे man of the match थे उस game के लिए, and Andre Onana would have to have the game of his life again. अगर यूनाइटेड को ये गेम जीतना है, गोल्स हैव टू कम फ्रॉम मार्कस रैशफोर्ड, अलेहांड्रो गर्नाचो और स्कॉट मैकटोमिने, और यू जस्ट हैव टू होप कि एक सेट पीस पे यूनाइटेड कुछ ना कुछ कर ले. बट द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट मैन यूनाइटेड बिकॉज मैनचेस्टर सिटी इज इन क्रेजी गुड फॉर्म. अर्लिंग हालैंड एंड केडीबी की परफॉर्मेंस, जो पार्टनरशिप है, इट्स एब्सोल्युटली इनसेन. अर्लिंग हालैंड ने 5 गोल्स मारे थे, उनमें से 4 असिस्ट किए थे केविन डे ब्रुयने ने. केविन डे ब्रुयने लुक्स बैक टू हिज बेस्ट. 12 गेम्स खेले हैं उन्होंने दिस सीजन एंड 12 असिस्ट करे हैं. एंड लुक, everyone would favor Manchester City. I don't expect Pep Guardiola to complicate it too much. Of course, Jack Grealish injured है, तो मुझे लगता है डोकू स्टार्ट करेंगे. बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ फिल फोर्डन स्टार्ट्स ऑन द लेफ्ट एंड जूलियन एल्वारेज, अर्लिंग हालैंड, केविन डे ब्रुयने, रॉड्री, ये सब लोग एक साथ खेले एंड मैनचेस्टर सिटी एक पूरे अटैक हेवी लाइनअप के साथ उतरती है यहाँ पे. ऊपर से सिटी का डिफेंस, ऑल दो सब लोग कह रहे हैं थोड़ा सा लीकी है, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक दिस combination with Walker at the back, with Akanji sometimes inverting in or with Stone sometimes inverting in, बहुत अच्छा है. आके भी आके can do a great job, as can Ruben Diaz as well as Edison in goal यार. So City is absolutely the perfect team. They're heavy favorites and United would have to play the game of their life. उनको suck in करना पड़ेगा मैनचेस्टर सिटी को and counter करना पड़ेगा because सिटी के अगेंस्ट बोर्नमथ काफी अच्छे काउंटर अटैक्स ला रही थी. अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स सिटी की क्वालिटी एंड में शाइन थ्रू कर गई. बट इफ मैन यूनाइटेड बी लीथल थ्रू मार्कस रैशफोर्ड और गर्नाचो or Bruno or McTominay, never know what happens because at the end of it, it is a derby. So who is your favorite for the Manchester derby? Because that is my game of the week. For Arsenal, it looks like an easy game on paper, but nothing is easy in the Premier League. Sometimes the teams you don't expect to drop points against the favorites, they can somehow get a result. So let's hope Arsenal are on form. वो कोई ओवर कॉन्फिडेंस से सफर नहीं कर रहे हैं. Let's do a professional job. Let's dispatch Sheffield and let's keep moving in the title race. As always, thank you so much for joining. My name is Daksh, and अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो कर लीजिए. Subscribe if you're new, and as always, come on you Gunners. See you. Bye bye.